नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, मैच द गैसेज अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर प्रॉपर्टीज और लॉज इन द कॉलम 2। अब ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन भी है। पहले अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करें, जब आपने Z वर्सेस P वाला ग्राफ पढ़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम के ग्राफ कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज अबव Z इज इक्वल टू 1। ये जो आपकी लाइन है, दिस इज Z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस लाइन से हमेशा हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर ही रहते हैं, सो दे आर ऑलवेज Z ग्रेटर देन 1, ओके। और जितना हाई प्रेशर आप दोगे उतना वो और ऊपर जाएगा, तो वैल्यू Z की ज़्यादा ग्रेटर देन 1 होगी। तो एट प्रेशर इज 200 atm, इट इज क्वाइट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर 273 केल्विन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, यस इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये आपका सही रहेगा। तो ए के लिए वी कैन राइट यस पी इज द करेक्ट वन। देन अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट कब होती हैं? दे आर डोमिनेंट व्हेन Z इज लेस देन 1, बट यहाँ तो Z ग्रेटर देन 1 है, सो बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सिव फोर्सेज विल बी डोमिनेंट, सो Q विल नॉट बी द correct one for the A option. PV is equal to nRT? No, it won't hold. Why? Because it is not behaving ideally. Because PV is equal to nRT is applicable only when Z is equal to 1. Okay, but here Z is greater than 1. So this case, fourth one, PV minus PB is equal to nRT. When you rearrange that, you get Z is equal to 1 plus PB by RT. That is Z is greater than 1. So yes, so P and S. So for B, hydrogen gas at almost zero when pressure is very low, almost zero, and 273 Kelvin. अब देखो, in this particular graph, when you reduce the pressure to almost zero, that is very low pressure. The graph is coming back to almost Z is equal to 1, means ideal gas behavior. So yes, at very low pressure, hydrogen gas will behave like an ideal gas. So compressibility factor will be equal to 1. So P सही नहीं होगा। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट नहीं, दे आर नॉट डोमिनेंट, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स PV इज इक्वल टू nRT, तो R, ओनली R। फॉर C, थर्ड ऑप्शन, CO2 at 1 atm 273 Kelvin at room temperature and not room temperature actually, 273 Kelvin is standard STP. So at atmospheric pressure 1 atm, you have seen the graph of CO2, it is like this. So at normal temperature pressure, it is what? In the lower side, Z less than 1. So Z less than 1 means attractive forces are dominant. So compressibility factor not equal to 1. Yes, because it is less than 1. So P will hold. Attractive forces dominant. Yes, Q will also hold. PV is equal to nRT. No, it is not behaving ideally. S, nahin, Z is not greater than 1. Okay. And for the last one, A, B, C, D. For the D, real gas with very large molar volume. बहुत large molar volume कब आता है? When the pressure is very low, because pressure is inversely proportional to volume. So pressure is very low and temperature is also high, because they have written very large. So that will accomplished at very low pressure and very high temperature. So at very low pressure and high temperature क्या होता है? Gases behave ideally, ठीक है। तो PV will be equal to nRT. So yes, R will hold, ठीक है। सिंपल, बस इतना सॉल्व होगा ये।